Hi and good afternoon, everyone. Welcome to Supergrads. My name is Abhin Chauhan and I'm back with another live session. कल हमारा discussion था students around idioms and phrases and आज का discussion is around synonyms and antonyms. Now synonyms and antonyms is again one of those topics जो NTA का बहुत preferred topic है 2022, 2023, 24, 25 जब से CUET एग्जाम कंडक्ट हो रहा है synonym antonym के क्वेश्चन काफी ज्यादा वेटेज है इनका. So that is what we'll be discussing today. We'll discuss some previous year questions और synonym antonyms again जो मैंने आपको कल के सेशन में बताया था about idioms and phrases. Synonym antonyms कैसे change होता है, कैसे different question types NTA हमसे पूछता है. So I hope everyone is ready and excited for today's session. Let's begin, students, with our first question. And पहला तरीका, पहला format जहां पर NTA आपको टेस्ट करता है, that is they'll give you a word and they'll ask what could be the correct synonym for a particular word and what could be a correct antonym for a particular word. ये एक डायरेक्ट तरीका है. The second and the most preferred format, एक ऐसा फॉर्मेट जो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि यार आपके फेवर में है, मैच द कॉलम फॉर्मेट में क्वेश्चंस जब होते हैं. And then of course there are contextual questions as well. So the first word that we have for today's session is vandalism. Vandalism generally क्या होता है when you see a mob is angry or violent crowd, right? Mob is angry or violent crowd. So जब ये mob सड़क पे आ जाता है, तोड़फोड़ करने लगता है, दुकानों को लूट लेता है, बसों में आग लगा देता है, that is what we call an act of vandalism. So vandalism is basically destruction and destruction generally of public property. Generally public property का destruction होता है. That is what vandalism is. So that was your first question. And people who do that are known as vandals. तो इसका noun भी आपको पता होना चाहिए, students. Again, something which is very important as far as your upcoming CUET 2026 is concerned. पहला word, I hope everyone has clarity around this word. Next up, we have this format, and मैंने आपको हमेशा ये चीज बताई कि भाई match the column format is always something that you would be happy with. You would want कि एग्जाम में मैच द कॉलम फॉर्मेट से क्वेश्चन ज्यादा हो because यहाँ पे you don't need to know the meaning of all the words. Even if you know the meaning of one or two words, that will work in your favor. So match the column format. Now the words that we have are astute, knave, lucid, and servile. So lucid is something which is clear, lucid pe lucid. Servile, subservient are synonyms. Servile or subservient means someone who's ready to obey the orders. So even if you know the meaning of these two words, I think ये question answer करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है. So D3 मुझे कहाँ दिख रहा है? I see that in two options. C4 मुझे कहाँ दिख रहा है? I see that only in option B and that is my correct answer. Astute is someone who is wise, who's very sharp-minded. And knave is someone who acts as a villain. So A2, B1, C4, D3 must be the correct sequence for this question. And ये आपका correct answer है. So the moment you start preparing कि CUET 2026 के लिए vocabulary कैसे पढ़ना है, so of course previous years में क्या क्या examiner ने पूछा है उस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए. You should have that astute mind कि कहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं. लास्ट ईयर पैटर्न ये था, इस ईयर पैटर्न क्या होने वाला है. दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच एंड दैट इज हाउ यू शुड ट्राई एंड प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम. So that was, students, our question number 2 for today's session. Next up, nearest in meaning to squalid. Now, जब भी आप कोई वर्ड पढ़ते हो आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये होना चाहिए कि उस वर्ड के अराउंड कितने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में कंपाइल कर सकता हूँ. सो दैट इज व्हाट योर एजेंडा शुड बी. Squalid is something that is dirty and filthy. And squalid के synonyms आप लिख सकते हो squalor,
hawkish. एंड द एंटोनिम इसका ऑपोजिट आप लिख सकते हो. देयर इज एन ईडियम स्पिक एंड स्पैन. Spick and span, that means neat and clean. सो जब भी आप कोई वर्ड पढ़ते हो उसके अराउंड आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि यार इस बार एग्जाम में स्क्वालिड था, अगली बार शायद स्क्वालर हो सकता है. कभी एग्जाम में स्क्वालर या स्क्वालिड का ऑपोजिट अगर पूछते हैं, सो दैट कुड बी योर आंसर. The correct one of the idioms that we also have related to neat and clean, that is spick and span. So I think we understood what squalid is, and at the same time squalid के अराउंड और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उस पर भी स्टूडेंट्स डिस्कशन हो चुका है. सो दैट वाज आवर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आया हुआ है, और आने वाले ईयर्स में ऑफ कोर्स किस तरीके से आ सकता है उस पर भी डिस्कशन हो चुका है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अ क्वेश्चन आई बिलीव इट इज फ्रॉम CUET 2024 एग्जाम का क्वेश्चन है. सो ये एक और तरीका है एनटीए का टू आस्क सिनोनिम एंड एंटोनिम टाइप क्वेश्चंस. वो आपसे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक, और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड रिप्लेसमेंट. यहाँ पे वर्ड रिप्लेसमेंट है कि रिप्रोच के लिए व्हाट इज वन ऑफ द वर्ड्स दैट वी कैन रिप्लेस. रिप्रोच को मैं इनमें से किस वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ. वी हैव अ लॉट टू रिप्रोच आवरसेल्फ about if we do not serve our parents. So that is what you people need to tell me. What does reproach mean? और reproach को मैं कैसे replace करूं? Should we replace it with repudiate? Should we replace it with adore? Should we replace it with criticize or lament, students? So I believe the correct word here should be, if we do not serve our parents, we must, what should we try? We should criticize ourselves. कि यार ये कैसा काम किया मैंने. So criticize must be a correct word that could replace the underlined word. Again, one of those formats जो 2024 2025 एग्जाम्स में ज्यादा आया CUET एग्जाम में. अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, स्पेशली दिस ईयर CUET 2025 के पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे. वी आर डन विद दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. यहां से जो भी हम सीख सकते थे, वी आर डन विद इट. नाउ हियर अगेन इज अ क्वेश्चन, आई थिंक इट इज फ्रॉम CUET 2023, क्योंकि एग्जाम में किस ईयर क्या क्वेश्चन आए वो मुझे सारे याद है. आप भी, मैं चाहता हूं कि यार प्रीवियस ईयर पेपर्स ऐसे पढ़ो कि आपको याद रहे कि अच्छा ये क्वेश्चन तो इस ईयर का क्वेश्चन है. ऐसे प्रिपरेशन करी जाती है if you want to really get 250 out of 250 in your language. Now the Air Force gave tactical support to the army. कुछ नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ ऑप्शंस के ऑर्डर को अरेंज और ऑर्डर को रीअरेंज कर दिया. सो टैक्टिकल इज स्ट्रेटेजिक. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. जहां पर सी लिखा हुआ है गलती से आप सी मार्क मत कर देना. ऑफ कोर्स दैट वुड बी अ वेरी that would be a big blunder, students. So for this, A must be the correct answer, students. Another question जहां पर word replacement NDA आपको word replacement करवाना चाहता है. So there can be questions of word replacement, there can be questions of contextual meaning, there can be questions in match the column format, and there are questions which are very direct. They'll give you a word and they'll ask you कि इसका synonym क्या है या इसका antonym क्या है. So that is how they ask the questions. Moving on, students, to question number 6. फेवरेट फॉर्मेट एनटीए का और स्टूडेंट्स का भी फेवरेट फॉर्मेट. स्टूडेंट्स को भी मजा आएगा अगर एग्जाम में मैच द कॉलम फॉर्मेट के क्वेश्चंस हो. स्टूडेंट्स, कैलस, व्हाट डज कैलस मीन? कैलस का मीनिंग यहाँ पे लिख देता हूं. Callous is someone who you could say is insensitive. A person who is insensitive, who doesn't bother about the feeling of others. मुझे जो करना था मैंने कर दिया, सामने वाले को बुरा लगा अच्छा लगा, आई डोंट केयर. Those kind of people are callous human beings. Then evade is to avoid.
Fickle is something that keeps changing, so unreliable would be correct. Adamant is rigid, and adamant के कुछ synonyms मैं चाहता हूँ आप लिखो, that would be important for the upcoming CUET 2026 exam. So adamant is stubborn, and another word that you can write is obdurate. Obdurate इस बार CUET 2025 के किसी शिफ्ट में आया हुआ वर्ड जरूर है. फिकल इज समथिंग दैट कीप्स चेंजिंग, समथिंग दैट इज अनरिलायबल. तो सारे वर्ड्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं. बचता क्या है? बचता है सिर्फ आपका आंसर करना. सो कैलस A3, वेयर डू आई सी A3? ऑप्शन सी में. Evade is to avoid. Fickle is something that keeps changing, something that is unreliable. And adamant is someone who is very rigid. So C is the correct answer, but it was not just about कि हमने करेक्ट आंसर कर दिया और हम चले गए और हम खुश हो गए. नहीं. और क्या क्या आप सीख सकते थे? सो फॉर कैलस वी हैव द वर्ड इनसेंसिटिव. एडमेंट के ये दोनों सिनोनिम्स सुपर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. स्पेशली द वर्ड ऑब्ड्यूरेट इस बार 2025 के सीयूईटी एग्जाम में भी था. आई होप यहां तक सारे बच्चों को क्लैरिटी है. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड द वर्ड इज असर्प. आई ऑलवेज से these टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिनका आगे पीछे कुछ नहीं पता, जिनका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, these are the most dangerous questions because these are risky. Either you know or you don't know. आप इसमें कुछ भी एलिमिनेशन नहीं कर सकते, कुछ भी अलग दिमाग नहीं लगा सकते. So usurp is to seize power by you would say to seize control by power. मतलब आप कहीं पर अपनी अथॉरिटी असर्ट करते हो with power, not democratically. So seize must be the correct word for usurp. Seize must be the correct word for usurp. इस क्वेश्चन से स्टूडेंट्स हम जितना सीख सकते थे, we are done with that. Let's quickly move to the next question. Next question is famished, and sentence भी पता है, which is a good thing. So after he came back from his evening walk, he felt famished. So famished is when we say someone is very hungry. When we say someone is very hungry, that is what famished means. So the correct word is in part B, और B लिखा हुआ है ऑप्शन D में. So एग्जाम में गलती से भी B मार्क मत कर देना. That would result in you that would result in you losing your marks. So the correct option is D. Word B में लिखा था and the word was hungry, students. So that was your question number 8. Let's quickly move to the next one. We need a word which is similar in meaning to sang Freud. CUET 2025 students. CUET 2025 में ये क्वेश्चन आया, एंड जो बच्चे ऑफ कोर्स क्लासेस अटेंड कर रहे थे, बैचेस में एनरोल थे, उनके लिए ये वर्ड बिल्कुल ब्रेड एंड बटर वर्ड था. क्योंकि sang Freud, जब मैं आपको काम एंड कंपोज रिलेटेड सेट ऑफ वर्ड्स बताता हूं, वहां पे हम ये वर्ड्स डिस्कस करते हैं. वर्ड्स लाइक sang Freud, वर्ड्स लाइक फ्लेगमेटिक, दोनों CUET 2025 के पार्ट थे. So coolness in trying conditions, being able to stay calm and cool in difficult situations, that is what we call sang Freud. Richa, stubborn का related discussion करना है. So here was the word. And adamant is, we say someone who's very ziddi, जो एक बात पर अड़ा हुआ है. So these are the synonyms that we have. Synonyms like stubborn and obdurate. So that was your word. I think we are done with these questions now. We are done with sang Freud. Let's quickly move to the next one, which is riposte. Riposte का synonym बताना है मुझे. Now, riposte is something that you give back to a person. So, retort would be the correct. Retort is like a giving back, giving a reply to someone. Giving a reply. So that is what retort means. एक और word जो अच्छा word यहाँ पे दिख रहा है, that is amiable. Sorry, amicable. Amicable is someone who is friendly.
amicable is friendly. Amicable भी CUET 2025 के पेपर में था स्टूडेंट्स. CUET 2025 के पेपर में ये सारे वर्ड्स थे. That was your question number 10, students. Let's move to the next one. And again, that brings us to one of NTA's preferred format, that is match the column. We have words like heinous, we have words like marsh, repeal, and jauntily. So, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैं बोलता हूँ आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है. एडवर्ब समझ में आता है, द ly वर्ड्स. जॉन्टिली इज लाइवली, D2 होना चाहिए. बट D2 आई थिंक इन्होंने किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है. सो आई बिलीव दिस क्वेश्चन मस्ट हैव बीन विथड्रॉन बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है. सॉरी, यहाँ पे 3 लिखा होना चाहिए. ठीक है, D3. सो D3 यहाँ है, D3 यहाँ है. Heinous is something which is evil, something that is abominable भी वही होता है. So A4, where do I see A4? चलो A4 भी आप बोल तो दोनों में लिखा हुआ है. Repeal is to withdraw. C2 इस ऑप्शन में लिखा हुआ है. That is your correct answer. D is your correct answer, students. But there are 2 words that are very important here. Words like heinous, words like abominable. Abominable is, if you see it, if you want to categorize it, I would say एक ऐसा word जो hard word है. And yes, exam point of view से बहुत ज़्यादा important है moving into CUET 2026. So these words mean something which is wicked, something that is evil, threatening. Words were heinous and abominable. इस पूरे क्वेश्चन से सीखने वाली चीज, the major takeaway are these 2 words, students. Moving on to the next question, we have words like grandeur, we have words like graft, malign, inception. So inception is beginning. T2 कहाँ दिख रहा है? सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है. That is my answer. Grandeur is magnificence. B1, graft is to implant, and malign is malign is to defame someone. C4. So option B must be correct. And of course, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे words नहीं हैं जिन पर discussion बनता है. So I expect that you will remember this set of words. And again, examiner match the column format में 3-4 question तो पूछ ही रहा है from synonyms and antonyms. एक आधा question from match the column, एक आधा question from one word substitution. So that is how you can expect questions moving into CUET 2026, students. And if you wish to get the perfect score, 1000 out of 1000, आपको लगता है कि हम कर लेंगे, but trust me, only 1%, probably less than 1% students get the perfect score. So if you want to do that, you need proper strategy and guidance. And वो strategy और guidance आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर, of course. So you can book your 1-to-1 session with expert mentors for career counseling, section-wise syllabus breakdown, and smart preparation strategy. The word strategy, students, is super important here. Syllabus आप पढ़ लेते हो, books आप खरीद लेते हो, but strategy आपको नहीं पता होती है. And that is why some students, I would not say some students, most of the students fail to get to their perfect score. So I wonder what you people are waiting for. This is where you can book your sessions. Moving on to the next question. अब ये एक और तरीका है, and of course tricky type है ये भी. Utility. Now utility is के synonym का pair मुझे देखना है. So A is definitely correct, I would say. यहाँ पे यूजलेसनेस लिखा हुआ है, तो यूजलेसनेस वाले ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. आप यूजलेसनेस को देख के एलिमिनेट कर दो. ऑफ यूज एंड वर्थ ये करेक्ट है. सो ए और ई जिस भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर. वेयर डू वी सी दैट? वी सी दैट इन ऑप्शन सी. एफिकेसी एंड बेनिफिट ये भी करेक्ट है. सो ये भी एक और तरीका एनटीए का आपसे सिनोनिम एंड एंटोनिम टाइप क्वेश्चंस पूछने का. And you must be prepared for all these different types. So A, B, and E are the ones that can be correct synonyms for the word
utility. Here again we have a word. So choose the appropriate word to replace the underlined word for the formal correspondence. Formal correspondence. Formal letters में. If you say kindly forward the emails quickly. So the word in formal language we use the word prompt response. Prompt is very quick response to something. Formal letters जब आप लिखते हो तो आप इसी तरीके से words use करते हो. That is option A. कहाँ लिखा हुआ है? A में ही लिखा हुआ है. So that has to be your correct answer to this question, students. NTA, as I said, अभी तक ये हमारा I think 14th 15th question है. आपने देखा होगा NTA has multiple ways of asking you questions on vocabulary and you must try and prepare yourself कि यार कैसे भी NTA पूछे मुझे हर तरीके के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना. ठीक है. That was your question. Next up, another match the column format question, students. Another match the column format questions for synonyms. Let's see if we can answer this. Let's see if we can learn something new. So brittle is something that is fragile. Brittle is something that can break easily. So that is brittle. Adjacent, adjoining, authentic, genuine, contrary, dissimilar. So A to B4. A to B4, option B, A to B4, C1, D3, that is the correct sequence. B must be the correct answer, but like I always say, सेशन में आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ करेक्ट आंसर देखना नहीं, क्या क्या और सीख सकते हो, कैसे ये क्वेश्चन हमारे प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं, ये सारे आपके मेजर टेक अवेज होते हैं. सो दैट वाज योर क्वेश्चन, स्टूडेंट्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड we need a word that is synonym of alleviate. So alleviate means to reduce the impact of something. Alleviate is to reduce the impact of something. Reduce, lessen, ये तो होंगे ही. So reduce and lessen. CNE, grow, increase, नहीं हो सकते. तो CNE, where do you see CNE, students? We see that here in option B, and that has to be the correct answer. Alleviate का अगर आप एक antonym लिखो, antonym के लिए I have this habit of making a cross. So एक situation को और खराब कर देना, that is aggravate. So this is an antonym, students. This is an antonym for the word alleviate. जब भी कोई नया वर्ड पढ़ो, try and ensure कि यार उसके अराउंड अब जितनी इंफॉर्मेशन है ना वो मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल ये क्वेश्चन था, अगले साल उससे रिलेटेड सिनोनिम्स हो सकते हैं, उससे रिलेटेड एंटोनिम्स हो सकते हैं, सब पे ध्यान रखना है. दैट वाज योर क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट वन. कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज is to disguise. So A must be the correct answer to this question. Option A must be the correct answer to this question. Again, a word जो एग्जाम में डायरेक्टली सिनोनिम एंटोनिम्स में भी आ रहा है, एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेट में भी आ रहा है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर each and everything, students. That was your question. Moving on to the word, and here we need a word which is synonym to ecstasy. Now, ecstasy is extreme joy or happiness. Extreme happiness. इसके और synonyms आप ले सकते हो. Elation, ebullient. And if you look at the given options, given option में ये तीनों negative words हैं वैसे भी. Delight is the word that can be a correct synonym for ecstasy. And ecstasy का मीनिंग होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इलेशन, ebullient. ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो सकते हैं. सो व्हाट आर योर मेजर टेकअवेज? एक्सटेसी के और सिनोनिम्स एक जगह पे कंपाइल करो, दैट इज फॉर जॉय एंड हैप्पीनेस. एट द सेम टाइम इसके एंटोनिम्स भी लिखो फॉर सैडनेस एंड सॉरो. जैसे डेस्पेयर, डेस्पोंडेंट एक वर्ड होता है जो यहाँ नहीं है. देयर आर मेनी सच वर्ड्स. सो दैट इज हाउ you should try and build a word family, students.
So that was your question, students. And here's the next question. Radhika has got this fixation with cleanliness. So fixation is obsession. You're fixated to something, that means you're obsessed to something. That is what fixation means, students. Now we have to pick out the meaning of the word rest and rest. So rest is to take something by force, to assert your authority over something, and this rest is to relax physically. So C must be the correct answer to this question. And that, my dear students, brings us to the end of this live YouTube session. I'll see you guys now in the next week. और किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, you can tell me in the comment section. Comment section में आप मुझे बताओ क्या टॉपिक ऐसा है जो परेशान कर रहा है, जिसके लिए आप मुझसे सेशन चाहते हो. So that is all for today's discussion. I'll see you guys in the next class. Thank you, everyone.